हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन विद अनदर गेम प्ले। और जैसे तुम लोगों को पता है, इस गेम में हमें लास्ट टाइम हमें बहुत ही मज़ा आया था। पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आया था। पता नहीं तुम लोगों ने कितना एंजॉय किया। और क्या कहते हैं, आज हम इस गेम को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था इस गेम को। सो लेट्स स्टार्टेड, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और इस गेम के जो म्यूजिक है इसके बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। ऑब्वियसली वो कॉपीराइटेड इतने है नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। ऑब्वियसली क्लेम अभी तक तो आया नहीं है। देखा सकते फ्यूचर में आता है कि नहीं, आई डोंट नो। फ्यूचर ही बताएगा जब ये इसका सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पुस्ट होने के बाद ही मुझे पता चलेगा। सो यप, अभी तक तो गेम में हमने बस सारे कैरेक्टर्स को अनलॉक कर लिए, मतलब उनके चलो जॉर्जी का, ग्रेगरी का, सैम, केल्विन, बारबरा, मॉली, एडी, नहीं एडी का नहीं, ओडिन, और मान के चलो एडिथ जिसके नाम पे है ये वाला स्टोरी, जो अभी जिंदा है बेसिकली 1999 के बाद से। अभी भी ये जिंदा है। ये इसके मदर्स थी मेरे ख्याल से, और ये सारे इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे। और ये थे ओडिन थे जिन्होंने बनाया था ये वाले घर को। सारी चीज़ों का स्टार्ट जहाँ से हुआ था ओडिन की वजह से। यप। तब हमें और कितने कैरेक्टर्स अनलॉक करने बाकी हैं। एडी एक हो गया, एडी, गस, डेविस, मिल्टन। तो 4 कैरेक्टर्स अनलॉक करने बाकी है अभी भी। तो लेट्स स्टार्टेड, मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाले। सो लेट्स डू इट। ओके। तो लास्ट टाइम तुम लोगों को पता था, हम अंकिल सैम मेरे ख्याल से अ, उनके कैरेक्टर को अनलॉक किया था मैंने। तब हम अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी पहले तो यहाँ से उतर। यहाँ से तो कूद पड़ जाएंगे हम। यहाँ से तो हम आए थे, तो अभी वापस जाना होगा हमें। ओ यहाँ से नीचे जाना है। कहीं पे तो जाना है, बट कहाँ पे जाना है यहाँ से। ए, यहाँ पे कोई और ही रूम है मेरे लग, जहाँ पे हम गए नहीं थे अभी। वहाँ पे ऊपर एक रूम, कौन सा है, वहाँ पे तो हम गए थे देखा जाए तो। तब हमें जाना कहाँ है वैसे, करना कहाँ पे है? नहीं, हम यहाँ पे नहीं जा सकते। चलो फाइंड करते हैं, उसी में तो मज़ा है फाइंड करने में। मुझे लगता नहीं कि हमें उतरना था यहाँ से। वैसे कोई ना कोई रास्ता होगा मुझे। मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ से ही कुछ हो। ये तो और तो कुछ है यहाँ पे। Nope, और कुछ यहाँ पे हम जा नहीं सकते।
लग रहा है यहाँ पे ही कुछ करना है। यहाँ से ही कुछ करना है मुझे। रोको, यहाँ पे सेविंग हो रहा है फिर से। मे बी आई डोंट नो, मे बी हमें यहाँ पे ही कुछ करना है। कि बाकी मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मे बी हैव टू गो देयर। यप, My mom moved to हम India a week after graduation and got a हमने job ये teaching मैं English. ये वाला जगह भूल ही गया था, Lewis was born a year later. मैंने देखा ही नहीं। ओके कोई ना, ये लगा ही था कि ऊपर वाले रूम में तो हम गए ही नहीं रूम पे, तो उस दिन हम ये वाला जगह, तब ये वाला जगह मिस हो गया था हमसे। When my कोई dad ना, died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. ये वाले लाइट्स मुझे बहुत पसंद है गाइस। हमारे क्या कहते हैं टेरिस पे भी है ये वाले लाइट्स, फेरी लाइट्स कहते हैं ना इन्हें। बहुत सही लगता है, बहुत सही। तुम लोग भी अगर लगाना चाहते हो तो अपने घर पे बैल्कनी पे तो सही नहीं लगेगा, अपने टेरिस पे ही सही लगेगा। बैल्कनी पे ही सही लगेगा, अगर खुद का घर है तो लगा सकते हो, बहुत सही लगता है। घर के अंदर भी लगा सकते हो दीवार पे, सही लगता है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत सही लगता है। चलो अब देखते हैं यहाँ And पे for a क्या है। while, things were good. Almost normal. But it didn't last. है क्या? ओ भाई यहाँ पे भी था, मैंने देखा ही नहीं। ऊपर मतलब हर जगह है, देख रहे हो यहाँ पे भी है। एडिथ, ओह मैं आते वक्त ध्यान नहीं दिया था, या फिर तब ये सारे लाइट्स ऑन नहीं थे मेरे घर। The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. तो अब मिल्टन की स्टोरी हम देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं। After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. बहुत ही यूनिक रूम है। अब यहाँ से तो जा नहीं सकते ऑब्वियसली, हमें कुछ और रास्ता जाने, और खिड़की के से बेहतर और क्या होगा। Milton Finch in The Magic Paintbrush. ओह ये वाले, ये चीज़ कभी भी तुम लोगों ने बचपन में बनाया है? मैंने बनाया बहुत टाइम पहले, मैं और मेरे दोस्त बनाते थे के टाइम पे, मज़ा आता था। और तुम लोगों को पता ना हो तो मैंने 7th ईयर तक आर्ट क्लास ज्वाइन किया है, मतलब 7th ईयर वाला एग्ज़ाम भी मैंने दिया है आर्ट क्लास। जब
Milton done also. I was 4 when Milton disappeared. He was 4 जब मिल्टन गायब हो गया था। फिर 4 साल की थी ये। वहाँ पे ऊपर भी रूम है, वहाँ से जा सकते। Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. ये वाला सीन देखो बस, बहुत सही है। मतलब ये वाले सीन को तुम लोग रिकॉर्ड करके वॉलपेपर इंजन में अपना वॉलपेपर भी रख सकते, इतना ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। थोड़ा सा एडिट चाहिए कलर के मामले में, बस हो गया। चलो बाकी रूम्स ट्राई करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग बचे अभी भी। Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room, until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Lewis's ओ भाई room, फुल हुक्काबाजी, except Lewis. फुल ट्रिपी वाइब, लड़का शौकीन था। फक जहाँ से तो ऑब्वियस। कैसा सा घर है अगर देखा जाए तो। फुल ट्रिप में रहता था ये मतलब। Lewis's room ओ smelled भाई very स्ट्रीमर था मेरे familiar. ख्याल से, That part of him lived on. तो स्ट्रीमर भी था, वरना 2 मॉनिटर के किस काम के लिए था। ओ भाई मैंने कहा था स्ट्रीमर था, स्ट्रीमर या फिर गेमर कुछ तो था, और 2 मॉनिटर है तो मेरा मतलब तो पूछोगे तो स्ट्रीमर ही था, क्योंकि देख रहे हो कंसोल वगैरह सब पड़े यहाँ पे। ओ भाई Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. बड़ा गेमर था, मतलब खेलना नहीं आता था बट गेमर तो था। देख रहे हो एग्जिट एंटर सब कुछ है यहाँ पे। Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind ओ began भाई ये to... पागल था, मच्छी काटता था ये। मेरे ख्याल से इसका भी मेरे जैसा ही हाल होगा, बहुत लोगों जैसा। हट
wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Things that have not names. He knew it was all in his head, but he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had भाई become मैं a model पागल हो employee. जाऊंगा. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. ओ भाई फुल ट्रिप बाजी. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished.
he held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. हैंडसम प्रिंस और ब्यूटीफुल क्वीन The होना queen चाहिए was था. on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her electric sitar. सारे हिंदी में हैं, देख रहे हो? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. पैंचो मुझे ट्रिप हो रहा है ये देख के, ये चलते For हुए. someone who'd never known दो success काम in एक the साथ real कर रहा हूँ world, मैं. I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping sand, Always choose but the left one side, climbing the guys. steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. ओ काटते काटते अपना खुद का ही हाथ काट देगा Began to ये forget और the मर world we जाएगा, know. क्योंकि ये तो ख्यालों में डूबा है. यस. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. ये मच्छी काटता था और मच्छी नहीं था, अपना हाथ ही काट लिया सोचते He सोचते. began to ये despise the ये है man with वो a है. royal contempt. देख रहे हो, इसे लग रहा है ये अब भी काम कर रहा है. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. हो गया, मर गया.
The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. ओ बेंड डाउन हिज हेड मतलब मतलब लास्ट में अपना खुद का ही सर दे दिया उसने, मच्छी काटते काटते ख्यालों में खो गया था और अपना खुद का ही सर दे दिया और मर गया। मतलब हेड चॉप हो गया था टोटली इसका। And the rest I think you know. GG Mrs. हो Finch, your गया। son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. लिविस My का brother भी was हो really गया। cool. I wish you could have met him. अब दो बचे, गस और डॉन और एडी। On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. हाँ My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. ओ अभी लास्ट स्टोरी है वो लास्ट नाइट के बारे में कि क्या हुआ था उस दिन। यप, लेट्स गो। That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. ओ अब हम इस देखने वाले। the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance.
or that Edie had a key to it. ओके सो यहाँ से है रेड डोर. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finches by Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. मैंने They कहा था ना. called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. मतलब ये भी मर गए उस रात. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. Fuck. At least इसके mom ने The कुछ. next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Oh, इसके mom भी She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive.
until I found out about you. What? Found out about who? I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. ओ ये इसकी बेटी है जो यहाँ पे, और इसकी मॉम भी मर गई थी उस घर पे जाने के बाद। कुछ हुआ था मेरे ख्याल से। आई एम थिंक सो। This journal was supposed to be for you. यप। तब इसकी बेटी या बेटा जो भी है उस वही ये स्टोरी बोल रहा है वैसे। But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. Oh. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. कि मॉम मर गई मेरे ख्याल से, कुछ तो हुआ था। हाँ, ये लड़की है जो ये स्टोरी पढ़ रही है बेसिकली। This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. एडिथ फिंच इसकी मॉम थी जो मर गई थी, और ये इसका बेटा है। 2017 को मौत हो गई थी, मतलब जब हम आए थे यहाँ पे बेसिकली, और तो हमने देखा था सिप पे उसका बेटा था मेरे ख्याल से। What a story, man, what a story. A story by Giant Sparrow और टर्ले डेलस। ओह, ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है क्या ऐसा कुछ? ये मैंने सुना था ऐसा कुछ है, स्टोरीज पे बेस्ड है और सारे कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ मैंने सुना था। आई डोंट नो ट्रू स्टोरी और हु आर दे ऑल। Oh, the technical director. Oh, the all character they played, basically all the characters who made this game basically developed this game. Producer, the designer, the effects artist, or everywhere, all of them. Nice ending है तो, बहुत सही है। यूनिक एंडिंग दिया है, मतलब जिन लोगों ने बनाया इस गेम को उनका ही बचपन का जो चाइल्डहुड फोटोज जो है एकदम लास्ट में। आई डोंट नो इट इज ट्रू स्टोरी बेस्ड और नॉट, बट मे बी 100% और नॉट, मे बी 80% मन। बहुत ही यूनिक था ये गेम। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ये गेम अभी खत्म हो चुका है या फिर और कुछ बाकी है इस गेम में एट द एंड। Michael Falick, producer, Evelyn. Sound designer. तब जिन लोगों ने मतलब गेम कैसे बना है और किन लोगों ने मतलब बनाने में साथ दी है एंडिंग में, ये बहुत ही सही। Obviously all the credits go to them. They made this game this beautiful.
अन्नपूर्णा इंटरेक्ट, इनके गेम बहुत ही सही होते हैं। इससे पहले वाला भी मैंने खेला था स्ट्रे, वो तो बहुत सारे लोगों ने खेला था, मतलब बहुत स्ट्रीमर्स ने, यूट्यूबर्स ने स्ट्रीम्स किए, गेम प्लेस डाले थे उसके, वो बहुत ही हिट हुआ था। जो एकदम लेटेस्ट आया था स्ट्रे, ये तो इससे पहले वाला गेम है। मुझे इस गेम के बारे में पता था बट खेलने का कभी मौका नहीं मिला, मेरे पास ये गेम था नहीं, तो मैं रिसेंटली खरीदी है। मैंने देखा कि बहुत ही सही है, बहुत ही वेरी पॉजिटिव रिव्यूज़ है। अदर लाइक देयर अदर गेम्स, नॉट अदर ऑल अदर गेम्स बट सम ऑफ देम, लाइक स्ट्रे एंड और एक गेम है इनके, मैं मुझे याद नहीं है, बट यप द गेम, दिस game was really pleasing to the story, the narration, the way of play game, मतलब गेम प्ले का जो क्या कहते हैं, जो मैकेनिज्म है बाकी गेम से बहुत ही अलग है। एडिथ फिंच टीम, ओ 2012 to 2007 the end. Nice, it was really nice game, really nice. The replay story option is now available. Select it to play from the beginning. Nope. हम रिप्ले कर सकते हैं। तो यस गाइस, वी फाइनली कंप्लीट दिस गेम। बहुत ही छोटा सा गेम था, मान के चल लो। तब मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी तब क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी कट पेस्ट कुछ नहीं किया इस गेम में। तो जितने घंटे का गेम प्ले तुम्हें वीडियोस में दिख रहा है, मान के चल लो उतने घंटे का ही है। फिर भी मैंने बहुत ही स्लो खेला है इस गेम। बाकी गेम बहुत ही सही था, मुझे बहुत ही मज़ा आया। आई होप तुम लोग भी एंजॉय करोगे इस गेम प्ले को। तो यप, तो बाय बाय, मैं चलता हूँ। तो अगर गेम प्ले में मज़ा आया तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, एंड ऑब्वियसली नए आए हो तो अगर गेम प्ले पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं फ्यूचर स्ट्रीम्स या फिर वीडियोस जो भी पोस्ट करूँगा, जो भी करूँगा चैनल पे, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय। और मैं देखता हूँ कोई अगर इस ऐसे टाइप का कोई गेम या फिर कोई भी अच्छा गेम लेटेस्ट आए हुए या फिर ओल्ड, अगर कोई पसंद आए जो मतलब खेलने लायक है, मुझे पसंद आए, यूनिक हो ऐसी, तो वो हम खेलेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मैं चलता हूँ। Thanks for joining this gameplay and be with me the whole time. So, yep. Bye bye.